सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। क्षमा खुजिবলৈ মই সাভাৰকাৰ নহয়, মই গান্ধী হয়। গান্ধীয়ে কাৰো ভাবুকিলৈ ভয় নকৰে আৰু ক্ষমাও নুখুজে। সাংসদ পদ খাৰিজ কৰি ভাবুকি দি জেলত ভৰাই ভয় খুৱাম বুলি ভাবিছে যদি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভুল ভাবিছে। মোক মাৰক পিটক যিয়ে নকৰক, মই মোৰ কাম কৰি যামেই। মই এইবোৰলৈ ভয় নকৰোঁ, এইবোৰ প্ৰশ্ন মই সুধি যামেই। বিৰোধীৰ হাতত ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ তুলি দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। লোকসভাৰ সাংসদ পদ কৰ্তন কৰাৰ পাছত প্ৰথমবাৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এইদৰে কয় কংগ্ৰেছ নেতা তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে। কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সম্বোধন কৰা সংবাদমেলত কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় বিজেপি চৰকাৰে তেওঁক ভয় ভাবুকি দি জেলত দি তেওঁৰ মুখ বন্ধ কৰিব নোৱাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গৌতম আদানীয়ে কি সম্পৰ্ক আছে আৰু আদানীয়ে 20,000 কোটি টকা ক'ৰ পৰা পালে, সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দেশবাসীক দিবই লাগিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সেই উত্তৰ নিদিয়ালৈকে তেওঁক প্ৰশ্ন কৰি যামেই। সাংবাদিকৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় ক্ষমা খুজিবলৈ তেওঁ সাভাৰকাৰ নহয়, তেওঁ গান্ধী হয় আৰু গান্ধীয়ে কেতিয়াও ক্ষমা নুখুজে। कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं, ये सवाल मैंने पूछा। चाहे स्टेट हो चाहे कुछ भी हो, मैं सच्चाई को देखता हूं, मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच्चाई बोलता हूं। राजनीति में यह फैशनेबल बात नहीं है, मगर यह बात मेरे खून में है, मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मेरा काम यह है, यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी तपस्या करनी है। বিজেপিৰ বাবে আদানীয়ে দেশ আৰু দেশ মানেই আদানী, আদানীৰ বাবে কাম কৰে সকলো বিজেপিয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু আদানীৰ মাজত কি সম্পৰ্ক আছে? আদানীয়ে 20,000 কোটি টকা ক'ৰ পৰা পালে? এই প্ৰশ্ন মই সদায় কৰি যাম আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ উত্তৰ দিবই লাগিব। গৌতম আদানী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাজৰ সম্পৰ্ক ৰাজহুৱা কৰা আৰু তেওঁলোকৰ মাজত এনে কি গোপন সম্পৰ্ক আছে সেয়া বাৰে প্ৰতি প্ৰশ্ন কৰাৰ বাবেই তেওঁৰ সাংসদ পদ খাৰিজ কৰা বুলি দাবী ৰাহুল গান্ধীৰ। ৰাহুল গান্ধীৰ দাবী যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু আদানীৰ মাজত যে গভীৰ সম্পৰ্ক আছে সেই বিষয়ে তেওঁ তথ্য সহকাৰে সংসদত প্ৰমাণ কৰিছে। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়, বিমানবন্দৰ, শ্ৰীলংকা, বাংলাদেশ আৰু জাৰ্মানী আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াত গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আদানীৰ বাবে কৰি অহা ব্যৱস্থাবোৰ সকলো তথ্য লোকসভাত দাখিল কৰা হৈছিল। কিন্তু লোকসভাৰ কাৰ্য বিৱৰণীত তেওঁৰ সেই প্ৰামাণিক তথ্যপূৰ্ণ বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰা নহ'ল। সঁচা কথাবোৰ কোৱাৰ বাবেই তেওঁৰ সেই বক্তৃতা লোকসভাৰ কাৰ্য বিৱৰণীৰ পৰা মচি পেলোৱা হ'ল। লোকসভাৰ অধ্যক্ষলৈও সম্পূৰ্ণ বিৱৰণী তথ্য প্ৰমাণসহ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যদিও লোকসভাত তেওঁৰ বক্তব্য কাৰ্য বিৱৰণীত সন্নিৱিষ্ট কৰা নহ'ল বুলি দাবী ৰাহুল গান্ধীৰ। सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है,
रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी पॉइंट बाय पॉइंट कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी, उसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके धमका के जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं। यह सच्चाई है। I told them, it makes me no difference if I'm disqualified, not qualified, whatever. It makes me no difference. Disqualify me for life. Put me inside jail. I will keep going. I will not stop. মোৰ পৰৱৰ্তী বক্তৃতালৈ ভয় খালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। মোৰ বক্তৃতালৈ ভয় কৰিয়ে সাংসদ পদ খাৰিজ কৰা হ'ল। মোদী আৰু আদানীৰ সম্পৰ্কৰ ৰহস্য ফাদিল হোৱাৰ ভয় মোদীৰ। লোকসভাৰ অধ্যক্ষয়ো পক্ষপাতিত্বমূলক আচৰণ কৰিছে। আবেদন কৰাৰ পাছতো বক্তৃতা দিবলৈ নিদিলে লোকসভাৰ অধ্যক্ষই। ব্ৰিটেইনৰ পৰা উভতি অহাৰ পাছতে লোকসভাৰ অধ্যক্ষই ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে পক্ষপাতিত্বমূলক আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। সংসদৰ মজিয়াত তেওঁৰ বক্তব্যক বিকৃত কৰাৰ লগতে ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰীয়ে। সংসদৰ মজিয়াতে সেই অভিযোগৰ উত্তৰ দিয়াৰ অনুমতি বিচাৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে অধ্যক্ষলৈ দুবাৰকৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল। অধ্যক্ষই ইয়াৰ কোনো উত্তৰ নিদিয়াত ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজেই গৈ লোকসভাৰ অধ্যক্ষক সাক্ষাৎ কৰে যদিও অধ্যক্ষই সেই অনুমতি নিদিলে। গান্ধীৰ অভিযোগ, গণতন্ত্ৰৰ ৰক্ষক লোকসভাৰ অধ্যক্ষও গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে। पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके धमका के जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं। यह सच्चाई है। बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनकी माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। बात समझिए। এই দেশে মোক সকলো দিছে, সেয়েহে দেশৰ বাবে সকলো কৰিম। সংসদ পদ খাৰিজ কৰা কাৰ্যই মোক
তলাব নোৱাৰে সাংসদ হ'লেও মোৰ কাম মই কৰি যামেই প্ৰশ্ন কৰি যামেই জনতাৰ মাজত আছো এয়াই মোৰ কাম আৰু মই এই কাম কৰি যাম আজিকালি সংবাদ মাধ্যম আৰু অন্যান্য অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহে কোনো সহযোগ আৰু সমৰ্থন লাভ নকৰে সেয়েহে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ একমাত্ৰ এটাই কাম আছে সেয়া হৈছে জনতাৰ মাজলৈ যোৱা দুবছৰীয়া কাৰাদণ্ড লাভ আৰু সাংসদ পদ খাৰিজ হোৱাৰ পাছতো ৰাহুল গান্ধীক মানসিকভাৱে অধিক শক্তি সঞ্চয় কৰাই নহয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই পদক্ষেপ লৈ বিৰোধীৰ হাতত এপাত ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ তুলি দিয়া বুলিও দাবী কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে ভিডিঅ' এডিটৰ প্ৰসিদ্ধ দাসৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও